तो जी किस जी तरह बिल्कुल के करेंगे। थीम्स में अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपको लगता है कि चलो जो भी है एआई आएगा जो भी होगा, बट ये थीम्स तो एवरग्रीन थीम्स है और इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगी। And investing is about a family. It is not a nuclear family. It is a joint family. How Correct. how is your mindset changing with change in time? Data is the way I look at life itself. Hmm. रिश्तों में भी मैं डेटा के हिसाब से ही चलता हूँ। When did you shift to Um, Dubai? How many years it has been? So what should I call you then? I call you a value investor, a growth investor, momentum investor. दोस्तों, शेयर बाजार में ना एक्सपीरियंस की कोई दवाई नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि 5 ml 10 ml डेली ले लो और शेयर बाजार का एक्सपीरियंस आता जाएगा और आप बहुत जल्दी तरक्की करेंगे। एक्सपीरियंस ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है शेयर बाजार में लंबी अवधि में बड़ा पैसा बनाने का। और ये फेस टू फेस के माध्यम से मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको जितने एक्सपीरियंस वाले लोग हैं उनको आपके समक्ष ला पाऊँ और आप उनके एक्सपीरियंस से जल्दी जल्दी सीख सकें। देखो, समय भी नहीं हमारे पास ना, 10 साल 20 साल 30 साल बाद क्या होगा क्या पता। बट लोगों के एक्सपीरियंस से सीख के अगर हम उस टेन्योर को कम कर लें, उससे अच्छा कुछ नहीं है। आज मेरे साथ फेस टू फेस के अंदर में एक ऐसे इंसान जुड़े हैं जिनका एक्सपीरियंस इतना रिच है, इतने सालों से मार्केट में रहे, गलतियां कर कर के सीखें, बट सीख के जो उन्होंने काम किया और जो वेल्थ क्रिएट किया अपने लिए, वो बहुत ही कमेंटेबल है। ये टीवी में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो आप इनको देखेंगे तो पहचान जाएंगे। और पुराने ज़माने में, इन दिनों का तो मुझे पता नहीं, बट पहले इनको बेर बोला जाता था कि ये मंदड़िए ज़्यादा हैं। वेल, आज के युग में मुझे नहीं लगता कि ऐसा उनका ओरिएंटेशन है, बिकॉज बातचीत से तो एक चीज़ समझ में आ गई कि वो इंडिया को लेके तेज़ी में हैं और तेज़ी में रहेंगे। तो उनसे समझते हैं बहुत सारी बातें जो कि इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन है, जो कि दिल से हैं, जो कि दिमाग से भी है, और बहुत कुछ अपने को बताएगा। छोटा सा वीडियो होगा बट आपको फ़ायदा बहुत होगा। सो वेलकम फॉर दिस फेस टू फेस मिस्टर शंकर शर्मा। वेलकम टू फेस टू फेस शंकर सर, हाउ आर यू डूइंग? very well, very well. It's a beautiful day here in Dubai. So yeah, life is looking good. Lovely. I visited Dubai a couple of months ago, and I was so impressed. What have they done to that city? I mean, to that country. I would say it's amazing. When did you shift to Dubai? How many years it has been? Oh, it's been a while. About, I think now it's about 13, 14 years. I saw the trade very early, actually. So the I knack of was picking a multi-bagger worked there as well, huh? I'll tell you, I mean, more than stocks, the city bet worked out really, really well, because when I was planning to become a non-resident in 2009 or something, जी Singapore and London were the obvious choices. Dubai wasn't on the radar जी because everybody said कि यार वो बहुत hot है, desert है, कहाँ जाओगे, ये वो है. And then I said, यार लेकिन time zone is fantastic, middle of the जी world, this that. एक बार आके देखते हैं. I came for जी an experiment. And which is अच्छा part of the reason why that's by the way I look at it. I don't like gambles, I like experiments. So मैंने कहा जी यार चलते हैं, आराम से वीजा मिलता है, we'll stay here for 6 months 1 year, we'll see how it goes. Worst जी case क्या होगा, बैग उठा के वापस बॉम्बे पहुंच जाएंगे, बॉम्बे में तो घर है ही अपना. एब्सोल्युटली। So I did a small experiment, it worked out fantastically, and now I think it's a global trade. The wealthiest in the world have moved to Dubai. I mean, it's just an amazingly happening city now. या दैट्स ट्रू। एंड उसका एक फ्लिप साइड भी है कि नाउ देयर इज टू मच ट्रैफिक एंड देयर इज इनफ पीपल ऑल द टाइम, व्हिच आल्सो आई मीन So this या this also brings me to one interesting thing that I've always believed, that जहां रहो ना वहां थोड़ी मंदी होनी चाहिए. दैट्स ट्रू। वेल सेड। And I say this, and I don't say this in in any zest. हाँ Just because I've said this to my friends कि यार मंदी थी ना दुबई में 10 साल before हाँ COVID. तो हाँ ट्रैफिक कम था, चीजें सस्ती थी, हाउस प्राइसेस, हाउस रेंट्स, एवरीथिंग वाज लो, तो बढ़िया लाइफ चलती थी. अब यार ये तेजी आ गई है तो मतलब ट्रैफिक इज आउट ऑफ कंट्रोल, इट्स जस्ट माइंड बॉगलिंग. सो थोड़ी मंदी में रहो ना तो अच्छा रहता है काम. चलिए, आई एम फीलिंग गुड दैट आई एम स्टेइंग इन बंगाल। अच्छा। See, I mean, Calcutta is a city very close to my heart. I've known it for a decade because I was born in Dhanbad. अच्छा अच्छा। So it's been like a twin city.
And it's still, I think, the least expensive city in the whole of India, Yeah. to the best of my knowledge so Yeah. far. Yes, I mean, we can still our life, live our life and enjoy the lifestyle the way we want to because of the There you go. So things. yeah, Yeah. so my theory holds. Thank you. Making me feel good today. Shankar sir, with you know, I have the liberty to have all kind of discussions, and because you do Dil Se discussion, so I don't have to use a presentation or visual aid to structure the discussion. तो आज इसको ना unstructured ही रखते हैं, and I want to please Better. ask you lot many things which I have in my mind. Sure. Uh, Sure. शंकर सर, मैं पहले चालू करना चाहता हूँ एक छोटी सी बात से कि मार्केट में कुछ लोग हैं जो नरेटिव ड्रिवन मार्केट को एनालाइज करते हैं, कुछ लोग हैं डेटा ड्रिवन ही मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो डेटा ड्रिवन नरेटिव्स क्रिएट करते हैं, एंड देन यू स्टिक टू दैट नरेटिव विच यू हैव क्रिएटेड बिकॉज यू हैव अ वेरी सॉलिड डेटा बिहाइंड यू। तो इस पे थोड़ा डिस्कशन को चालू करते हैं, एंड देन आई हैव फॉलो ऑन क्वेश्चंस विथ यू व्हाइल यू आर आंसरिंग दोस क्वेश्चंस की what is the relevance of data in financial market overall, and why one should only talk the language of data, which you have followed for decades now, and the new guys who are coming into the system, they're getting lured by a lot of narratives across social media platforms. So more academically, please start with the discussion of how to look at the data in financial market. So financial market, in my view, are nothing but bits and bytes. And that's been my belief for the longest time. I mean, जी. ever since I started in this business, or I think late 80s. My first investment, of course, in 1982 when I was in college, but uske beech mein fir kafi gap hua. Baad mein late 80s mein I picked up. But the fact of the matter is, markets are ultimately only a stream of data. जी. The rest is all marketing. Okay. And a lot of the marketing is done by interested parties, whether it is mutual fund managers, it is wealth managers, it is brokers. And India, being a service-driven country, the marketing angle is very strong. You can see the marketing for India, Indian equities has been amazing. It's been one of the biggest marketing stories of all time. But that's exactly where you need to become careful as investors. Okay. My approach is that I look at data. Data is the way I look at life itself. रिश्तों में भी मैं डेटा के हिसाब से ही चलता हूं, और मार्केट भी एक रिश्ता है. When you buy stocks, it's also a relationship with that company or with that stock. It has to be borne out by data. But I am also cognizant of the fact, and I'll tell you why. I'm cognizant of the fact that beyond data, perceptions can inflate or deflate the value of data. And the reason why I say this is, yes, so data एक आपकी एक बेस लेयर बनाता है. उस बेस लेयर के ऊपर में the perception can drive a lot of perception of the data itself. Because what is data? What is data? वही बैलेंस शीट सबको मिलता है, वही क्वार्टरली सबको मिलता है, वही पीएनएल सबको मिलता है, वही जीडीपी के नंबर सबको मिलते हैं. अब आप एक तरह से देखोगे, मैं दूसरी तरह से देखूंगा. करेक्ट? डेटा तो वही है ना साहब. आपके लिए कोई अलग, आपको कुछ भी प्रिविलेज नहीं मिलता है इस मार्केट में. पीपल से आपको कुछ ज्यादा मालूम है, आपको कुछ नहीं मालूम है. वी विल गो एंड इंटरप्रेट दैट डेटा probably a little better, but not that we'll get anything which is different from what people in general will get. The question is really that back in the day, in 96, 97, when the technology bull market started in India, I was driven by data. And the data told me and us that Indian PE ratios will be typically 15, 20, 12, 25, उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि India was a high interest rate economy. Okay. Back then, FDs used to be 10-12%. And one of the reasons why we all grew up in this environment, that selling was better and more profitable than buying in the 90s. And a lot of people from Calcutta were very good at it, that Tata Steel को short कर दो, साल का 20-25% आपको ब्याज बदला मिलता है, उतना भाव चलता नहीं है कभी भी, इनफैक्ट घटता ही है, and you make 20-25% virtually risk-free carry trade आपके पास बन जाता है. जी. And we came from that mindset. Suddenly came the tech boom. And in the tech boom, suddenly Infosys was trading at 60, 70, 80 times PE multiple. I remember in 98. And I said, this is ridiculous. My data, my analysis tells me it should be trading at 20, 25. Chalo, bahut achhi company, 30. And I went and shorted all the tech companies in India, thinking based on data, based on analysis.
They were overvalued. They were going to fall. Trust me, that was the most brutally bad period of my life. I was virtually bankrupted by that short trade across all the tech companies that were trading in India. And it lasted a brutal 6-8 months till I realized that data is only up to a point valuable. Beyond a point, perceptions matter, narrative matters. So that lesson was a very valuable lesson. I take data, but I don't only believe in data. I also understand the value of perceptions. And perception is narrative, is what you're talking about. So Vivek, my view is this: one should not become rigid in investing. कि सिर्फ डेटा है या सिर्फ नैरेटिव है, सिर्फ परसेप्शन है, नहीं. ये एक दाल है जिसमें बहुत चीजों को मिला के आपको बढ़िया आपको चीज बनानी है. और the wider the range of factors you look at, the better as an investor you will become. Okay, I don't want to be too narrow in my frame of thinking. So to answer your question shortly, I'm very data driven, very numbers driven, but I recognize the value of narratives also. Okay. Let's take an example of Infosys then, and probably we have companies like Zomato now. Similar, I mean, obviously the business model different, but we are in a similar situation जब वहाँ पे उस समय टेक बूम में हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे वो सब कंपनीज पे, और हमको मन करता था हम शॉर्ट कर दें, और आप बोल्ड इनफ थे कि आपने शॉर्ट किया. अभी आज के रेट में जोमेटोज ऑफ द वर्ल्ड में भी शायद ऐसा ही कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, वेयर दीज बिजनेसेस आर सो बाइनरी that somehow people are not able to correctly estimate the future potential of these companies. Some are doing very wild calculations. Some like people like conservative people who say that खाना ही तो deliver करता है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई. तो how is your mindset changing with change in time, right? Because 20 साल पहले 30 साल पहले आपने जो एक व्यू बनाया था, उस समय आपकी एक सोच थी. अभी क्योंकि मार्केट में इतने साल अब लग चुके हैं, you know where you have gone wrong in so many things. आज की रेट में you are comfortable buying stocks like Zomato, Nykaa of the world, or you are still saying that nah baba, I am not going to venture into those, even though I believe that narrative is okay to look at? It's a good question, Vivek. I'll answer it in one line. That my broad thinking, which is what I was just talking about, is this: that play everything but believe nothing. Okay. बस मेरी ऑपरेटिव फिलॉसफी इन लाइफ इटसेल्फ इज दिस. सही है. ओके, बिकॉज़ कई बार भगवान पे भी विश्वास नहीं होता है. अगर कोविड के ही टाइम में देख लें तो बिना किसी रीजन से इतने लोग मर गए, तो आपको तो पूछना तो पड़ेगा ना सवाल भगवान से भी, भगवान इनकी क्या गलती थी. सही बात है. अच्छे लोग थे. तो ऐसा नहीं है कि यू कैन नॉट क्वेश्चन, यू शुड क्वेश्चन. सो आई डोंट नेसेसरली हैव टू बिलीव इन एवरीथिंग आई बाय. ओके. So the way I look at investing is this, and which is very different from what I grew up believing and what we were taught in the 90s. That great company, you go all in, concentrate your bet, with all eggs in a few baskets. And thankfully, it worked in some cases, but it did not work in many cases. And that the main reason why people in India started thinking like that was Warren Buffett, because he taught us this. Or he told us this, told the world this, that these are ideal companies. They are pure as driven snow companies. ये beautiful से world में, beautiful से aura में रहते हैं. ये angelic companies हैं. So we started looking for angelic companies. In reality, there's nothing called an angelic company. सब angels and demons वो बदलते रहते हैं वक्त के साथ. My approach today, after 30 years, is that there is nothing called a demon. There's nothing called an angel. Okay, Paytm was a demon 6 months ago. Today, suddenly it has become angelic. Okay, Zomato was a demon after listing. It has become an angel now. True. And other things are going from being angel like Asian Paints and, HDFC Bank, Kotak Bank, from being angels to becoming demons. ये market का एक cycle है. I don't have to believe in everything I buy. So to answer your question, if I believe broadly speaking कि यार एक experiment के लायक है ये share, I will take a toe hold position. Okay. Which is what I did in Zomato. Okay. Which is what I did in Paytm. I don't have to believe in them. Belief comes only with more data. शुरुआत में तो हाइपोथेसिस ही होगा ना साहब. Absolutely. यार एक हाइपोथेसिस पे मोटा मोटा लगता है कि फूड डिलीवरी का बिजनेस अच्छा होगा, दे हैव अचीव क्रिटिकल मास, जो भी कहानी आपको बनानी है बना लो. तो चलो कुछ डालते हैं पैसे, फिर देखते हैं. So my operative philosophy is I like experiments. I don't like to gamble. Okay.
सो आई ओके। एम एन एक्सपेरिमेंटर, मैं प्रयोग करता हूं। प्रयोग का मतलब क्या होता है, आप एक लेबोरेटरी कंडीशन में थोड़े से केमिकल मिलाते हो और देखते हो कि बड़ा ये पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा कि नहीं बनेगा। बिफोर गोइंग न्यूक्लियर, डू स्मॉल एक्सपेरिमेंट। सो आई डू स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स विद माय पोजीशंस। सो आई डोंट हैव टू हैव अ स्ट्रांग व्यू ऑन जोमैटो, आई डोंट हम्म नीड टू। हम्म। Let the data drive my strong view, but I will have that incentive to create strong view only if I've got toe hold position. तो छोटा toe hold position मैं ले लेता हूं। So ओके। I play everything. I've got 130 stocks in my portfolio. ओ। Okay. ओके। और उसमें से कितने स्टॉक्स होंगे जो आप लाइक जिन पे आप ऑल इन जा चुके हैं या जिन पे बड़ा क्वांटिटी है, एंड कितने स्टॉक्स होंगे जो आप ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहे होंगे कि चलो टोकन डाल के देखते हैं, इनको ट्रैक करते हैं? I would say maybe 20-25 would be significant, and ओके। Baki 100 will be in the process of either becoming terrible or becoming terrific. We will ओके। see. देखा ओके। जाएगा। तो नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग द प्रोसेस, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ कि सपोज आपने जोमेटो में वॉट एवर अमाउंट, छोटा अमाउंट आपने डाल दिया, अब कब हम उसको और स्केल अप करने का प्लान बनाएंगे और कितना स्केल अप करेंगे? अच्छा सवाल है। देर आर, इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट टू अंडरस्टैंड दिस, एंड दिस इज अगेन बाय द वे आई एम कमिंग बैक टू डेटा, जी। and it's an important thing for people to understand that there is a concept in investing which very rarely talked about, but that is my, I would like to say that is my invention. Is there's the concept of return decay. ओके। Return decay का मतलब क्या होता है कि when any stock goes through a period of extraordinary returns, जी। and I've done this data over decades across markets, so I mean, I don't want to go into that. Is that when you have got a stock that has compounded 40, 50, 60% for roughly 2 to 3 years, okay, हम्म। then you are going to enter a period of return decay. ओके। What that means is for the succeeding 3 or 2 years, it will deliver you subpar returns. ओके। Okay? Because no stock, no market is capable of delivering those returns consistently over 10, 20 years. I mean, okay, one will pick up one stock here and one stock there. We are not talking outliers. I'm talking a broad basket. देखो आउटलायर्स तो हर चीज में मिल जाएगा आपको, कोई भी डेटा सेट लेंगे आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल ही जाते हैं। दैट्स द करेक्ट, तो ब्यूटी लेट्स ऑफ एक्सक्लूड स्टैटिस्टिक्स। देम। दैट्स राइट। Correct, exactly. Let's talk about the main data set. The main data set is that 50-60% compounding 3 years अगर आपको मिल गया किसी स्टॉक में, you have to take money off the table. तो सर बाय Doesn't एंड mean होल्ड, 100% exits, but बाय, I would say, सॉरी sorry, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया, बट व्हाट अबाउट देन बाय एंड होल्ड, बाय होल्ड सेट टाइट, बिकॉज अगर आप निकल जाएंगे और फिर सपोज अचानक से उसके अंदर में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो गए कि वो वापस चलना चालू हो गए, तो फिर आपके अंदर में फोमो आएगा कि अरे यार ये तो मेरे पास था, मैं तो निकल गया इसमें से। नहीं नहीं, I'll give you an example. That is a BLS International. मैंने जी। लिया था 2022 में. Okay, हम्म I think maybe 100 rupees, 80 rupees, I forget what price. Today it is 500 rupees. हम्म। I still own 40% of my original position. अच्छा, तो पूरा नहीं निकले आप? पूरा नहीं निकले, तो मैं ओके। वही कह रहा हूं, डोंट टेक एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव्स इन मार्केट। हम्म। आदमी फंसता है एक्सट्रीम पर्सपेक्टिव्स। व्हाई डू वी हैव टू बी ऑल इन और ऑल आउट? अरे साहब, बीच में बहुत बढ़िया एक स्वीट स्पॉट है कि यार उसके मतलब एक बड़ा मदरशिप आपका बन गया, सपोज कीजिए पोर्टफोलियो में, उससे आप छोटे छोटे मदरशिप बना दो ना, बाकी 25, फिर उस 25 में से भी 5 और मदरशिप बनेंगे आपके। सो आई हैव स्टिल गॉट 40% ऑफ माई पोजिशन इन दैट वन स्टॉक। 60% मैंने धीरे धीरे करके वन साइड इट ट्रिपल, आई केप्ट एग्जिटिंग। अब उस एग्जिट से कैश टू कैश पे बैठेंगे नहीं। We find other stocks which are not in the return decay phase, where the returns are in the future, not behind. So that is the way over time, एक मदरशिप, 2 मदरशिप से आप छोटे छोटे बच्चे पैदा करके आप एक बढ़िया फैमिली बनाएंगे। And investing is about a family. It is not a nuclear family. It is a joint family. Lovely. What a Yeah. beautiful thought process. Investing is like a joint family where you have many, many characters as part of one family, and you have to have a very strong Correct. level of tolerance for each of the characters, no? Exactly. Yeah, Exactly. तो ये क्या कि न्यूक्लियर फैमिली कर लिया जी, मियाँ बीवी, बाकी और कोई है नहीं। ये इन्वेस्टिंग ऐसा नहीं चलता साहब। एकदम एकदम। तो सर अगेन आप ही के प्रोसेस में एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं। तो
For you, data points like P multiples, yeah, PEG ratio, which are classic uh, theoretical plus maybe a hybrid practical parameter जिसको देख के decision making generally होती है. How much weightage you are giving to those parameters at this stage? I'm not a huge believer in valuations. Okay. So again, what I'm saying is goes back to my 97 disaster trade of shorting Infosys. जी कि हमने तो 80 पे शॉर्ट करके सोचा था कि 20 पे आएगा, वो 80 वाला 400 हो गया था पीक पे 2000 के बबल के पीक पे. जी So since then I stopped looking at PE multiples. I look at it. So here is the thing, Vivek, that again, when I say this, I say it in a bit of joke. That I look at PE multiples, of course, जी but I also understand that it is not like a bedrock of be all and end all of investing. Okay. The reason being that PE multiple क्या राइट है क्या रॉन्ग है किसी स्टॉक के लिए, इसका कोई साइंस नहीं है. इसका कोई साइंस नहीं है. कोई नहीं कह सकता कि एक स्टॉक के लिए 20 राइट है, 15 राइट है, 25 राइट है, 50 राइट है, 500 राइट है. हु कैन से? नोबडी कैन से. कहानियां बन जाती पीई मल्टीपल के ऊपर कि अगर कोई चीज 500 है तो फिर कहानियां बनेंगी टू जस्टिफाई 500. अगर वही चीज 2 साल के बाद 5 मल्टीपल पे आ जाएगा तो कहानियां बन जाएंगी 5 के लायक. तो कहानियां फॉलो करती हैं पी मल्टीपल को, नॉट द अदर वे अराउंड. सो आई लाइक टू बाय थिंग्स व्हिच आर रीजनेबली वैल्यूड. ऑफ कोर्स वी ऑल शुड बी, बट आई एम कॉग्निसेंट दैट समटाइम्स मोर एक्सपेंसिव कैन बी बेटर. Okay. So where what you should see the future being so strong that the current multiples don't matter. Right. So what should I call you then? I call you a value investor, a growth investor, momentum investor, or you are an hybrid person, or you are an investor, an opportunist. यहाँ पैसा बनने को लगेगा उसमें निकल जाने का. Let's not qualify myself as something a category for yourself. अपने 2 हीरो थे, गैरी सोबर्स एंड कपिल देव. आपको if you follow cricket, you know what kind of players they were. Yeah. They were all rounders. Correct. Okay, so that's the way I look at myself, that I will play every pitch, every game, every bowler based on the merit of that pitch. I will not go in with preconceived notions. I will keep my mind very free of any kind of cobwebs. And each game has to be on its own merit. So that's the way I look at markets. I don't want to have a rigid framework. I don't like rigidity. Okay. भाई आर्टरीज में भी रिजिडिटी होगी आपकी तो आप मर जाएंगे एक ना एक दिन. Wow. राइट. मसल में आप रिजिड हो जाओगे तो मसल फट जाएगा आपका. तो why be rigid in investing? Beautiful. सर एक टॉपिक पे चर्चा करते हैं, दैट मल्टी बैगर टू मल्टी बैगर जर्नी. तो a stock which is a multi-bagger, everyone wants to own a multi-bagger because that's what the core genesis of investing for at least a retail investor is कि यार 3 times, 4 times, 10 times नहीं हुआ तो क्यों इक्विटी में इन्वेस्ट किए, right? That's what retail thinks. But that eventually, if you are not mindful of right stock, that stock can create multiple beggars. So आपका formula for multi-bagger investing क्या है? And how do you protect yourself? Because गलतियां आपने भी की होंगी सर. How do you protect yourself to get into that zone of being a multi-bagger in a stock? So सबसे पहली बात है that multi-baggers are best picked in hindsight. Okay? So वो foresight में नहीं होता है साहब. ये कहना बिल्कुल बेवकूफी है, या मैं आपको क्या मतलब मैं दुनिया को झांसा दे रहा हूं कि मेरे को मालूम है. हाँ, कुछ स्टॉक्स में पता चलता है. To be again fair, जैसे HDFC Bank, okay, when it listed in 96, again, because of one had some inside track on that. The management was known to me personally because they were colleagues and boss of mine in Citibank when I started in banking. Okay. So there was some degree of inside knowledge there that one knew that they will do very well. Again, to be fair, one did not know how far and how great they would become. But that they will be better than the banks of that time, IndusInd Bank, Times, Guarantee, ये सब 4-5-6 नए बैंक्स आए थे 20th century. इस तरह के बहुत बैंक्स हैं. NBFC का एक बोलबाला था 90s में. I was clear that this bank will do far better. Now, will it become current HDFC Bank? I have no idea. Same way, I bought Amazon in 2001.
I bought Apple in 2002, right at the really probably near the bottoms of close to the bottoms, or maybe a little bit. It had bounced back, I remember. And I did not buy it to, I mean, ultimately I made a lot of money, but the point is not that I knew that it was going to be up 150 times or 200 times. Amazon was 200 times for me over a 10-year period, 10-12 year period. मतलब कि समझ लीजिए $20 का वो आप, I mean nearly $2,500 जो भी स्प्लिट प्लेट बीच में हुआ होगा. So it was a huge one, but nobody knew. Even Jeff Bezos did not know. Steve Jobs did not know. So multi-bagger hindsight में होता है. अब the way to get a multi-bagger is very simple. You start with a decent number of your hypothesis experiments. Okay. तो आप 25 से 40 स्टॉक पे स्टार्ट करेंगे. Whatever method, framework you want to use, okay, that will give you your initial data set on which you are going to understand what is happening. Okay. From that, you will see within 1 or 2 quarters what is the winner pack. You will start to see the numbers, the data, the commentaries will be dramatically different for, I would think, 20% of this 30-40 companies. Okay. Statistically, उससे ज़्यादा मिल गया, so then I don't know, even God can't get it. Okay. Then you will rotate out of your losers and put money behind those winners on an ongoing basis. So आपने अब 40 स्टॉक लिए, आपको 20-25 मिले, मतलब 10-12 स्टॉक अच्छे मिल गए, बाकी 10-12 बीच के पैक वाले मिडिल ऑफ द पैक थे, और बाकी 10-20 आपको फालतू भी मिलेंगे. उनको आप निकाल दो. लाइफ में कभी भी भाई संगत का असर होता है, जो लोग कहते हैं ना साहब स्कूल कॉलेज में, तो खराब लूजर स्टॉक के संगत में भी नहीं रहना चाहिए. ओके ना, संगत से आपको खराब करेगा वो उसको जल्दी निकालो. टॉक्सिसिटी निकालो लाइफ से, नेगेटिविटी निकालो लाइफ से. वो रहेगा तो आपको तकलीफ देता रहेगा. इट इज लाइक अ स्लो प्रिक एवरी डे इन योर स्किन. एलिमिनेट द लूजर्स, स्टे विद द विनर्स इन लाइफ, स्टे विद द विनर्स इन योर पोर्टफोलियो. इससे क्या होगा, साल भर के बाद उर्स जो 8-10 बचेंगे, you will have, in my view, not less than 4 or 5 which have been up 200, 300, 400%, if not more than that. They will become the core of your life. Okay. That's how you get to multi-baggers. इसमें कोई people say कि जीनियस के चलते, कोई जीनियस नहीं है साहब. आपको छोटे छोटे प्रयोग करने पड़ेंगे. उस प्रयोग का रिजल्ट होगा कि एक आपको न्यूक्लियर मिलेगा या मे बी 2 मिलेंगे. Yes. So, but don't start out with 2. Don't start out with 2. People make the mistake. All in with 2. साहब उसमें ज्यादा आप बैंकरप्सी की कोर्ट की तरफ जाएंगे rather than towards a penthouse. Got it. तो मैंने स्टेप्स लिख लिए हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. पहला स्टेप जो आपने बोला कि स्टार्ट करो वो हाइपोथेसिस या एक्सपेरिमेंट से, उसमें व्हाट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ आइडेंटिफाइंग अ स्टॉक? बिकॉज 5,000 स्टॉक है, सब में एक इंडिविजुअल तो हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं कर सकता है. तो जनरली देखिए, अब आपके पास शंकर सर ईजियर हो गया है, अब स्टॉक आपके पास खुद चल के आता है कि मुझे देख लो, क्योंकि यू आर रिसोर्सफुल, यू आर वेल कनेक्टेड नाउ, सो इट्स इजियर फॉर यू टू काइंड ऑफ, आई मीन नॉट इन दैट सेंस easy, but how does a retail who want to direct stock investing करें, तो वो उसको कैसे आइडेंटिफिकेशन करे, सोर्सिंग कैसे करे अच्छे स्टॉक्स को? सर आपका बहुत बढ़िया ऐप है, आपके ऐप पर बहुत इंफॉर्मेशन है. इफ एनीबडी स्पेंड्स टाइम ऑन योर ऐप, एंड नाउ बाय गॉड्स ग्रेस देयर इज अ लॉट ऑफ एप्स अवेलेबल इन इंडिया एम्पावरिंग रिटेल इन्वेस्टर्स. देखिए साहब, पहली बात, ये मेहनत का काम है. ये लगता आसान है, लेकिन इसमें काम तो करना ही पड़ेगा ना. आपको लगेगा कि कोई टपका दे आपके झोली में, तो आप तो फिर भीख मांग रहे हो. आप भीख मत मांगो. हाँ, भीख मांगने का काम नहीं कि सर टिप दे दो. अरे यार, तुम खुद करो. इतने टूल्स विवेक बजाज ने इतना बढ़िया टूल बना दिया है, एंड आपकी तरह कई लोगों ने टूल्स बनाए, उसको इस्तेमाल करो. भाई अब खुद नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्षम नहीं बन सकते हो गेम में. आप कितना बार बोरोड आइडिया के ऊपर चलोगे? तो पैसे भी बनाने हैं, काम भी नहीं करना है, तो फिर ऐसा और कोई नजर आता तो मुझे ही बताओ सर, हम भी वही करेंगे. इट इज अ गेम ऑफ डीप स्टडी, इट्स अ गेम ऑफ डीप इंटेलेक्ट, इट्स अ गेम ऑफ डीप नॉलेज. So you want to make money, first invest in knowledge, first invest in your brain, and you have tools like your stock agent, other tools. Use them.
Put your criteria. And by the way, I can tell you this, इतना complicated भी नहीं है भाई. What do you have to look at कि भाई कंपनी का मल्टीपल्स क्या है, वो तो एक बेसिक चीज है ही है. जी. कंपनी का ग्रॉस ब्लॉक में कितना कितना ग्रोथ हो रहा है, उससे आपको मालूम चलता है कि भाई वो कितना कैपेक्स कर रहा है. भाई कैपेक्स कर रहा है तो होपफुली उसको कुछ नजर आ रहा है तभी कर रहा होगा. आई एम नॉट सेइंग 100% ऑफ द टाइम सही होता है, लेकिन अगेन आई बिलीव इन डेटा सेट्स दैट आई डोंट हैव टू बी राइट 100% ऑफ द टाइम. 20-25-30% तो रॉन्ग मान के ही चलो ना, क्या प्रॉब्लम है? It doesn't destroy your original hypothesis, only strengthens it. That you will get 20-30% of your hypothesis wrong. It is the way experiments work. It did not work. It's okay, move on. तो ये जो क्राइटेरिया है इतने डिफिकल्ट नहीं है. ग्रोथ रेट्स हैं, क्वार्टरली नंबर्स है, मार्जिन्स है, कैपेक्स है, यही 7-8-10 चीजों का स्क्रीनर बनाओ, आपके पास आ जाएंगे 30-40 स्टॉक. It's not difficult. Your people like yourselves are empowering them. Why should it be difficult? तो एक बार 30-40 स्टॉक आ गए तो उसके अंदर में थोड़ा डीप एक स्टॉक पे रिसर्च कितने घंटे अप्रोक्सीमेटली सर? आई नो इट्स अ वेरी आई यू नॉट लाइक दिस क्वेश्चन, आई नो, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ मेकिंग लाइफ इजियर फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि वो 30 स्टॉक के अंदर में अगर हर स्टॉक पे मुझे कितने आवर देने चाहिए कि मैं एक बेसिक लेवल का रिसर्च उसमें कर पाऊं. व्हाट इज योर, इज इट 3 आवर, 30 आवर, 300 आवर, 3000 आवर्स पर स्टॉक? देखिए साहब, मोर देन आंसर्स, आपके तजुर्बे से आपके दिमाग में सवाल अच्छे बनते हैं. अब जैसे मैं उस दिन एक कंपनी से बात कर रहा था, एंड दैट कंपनी इज अ वेरी गुड कंपनी. आई मीन आई हैव नॉट इन्वेस्टेड इन इट, बट आई माइट. एंड काफी चीजों के बाद में मैंने तो एक ही चीज देखा कि भाई उनकी एक्सपोजर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के पास में है, तो इंडस्ट्री का कुछ मुझे नॉलेज था. तो मैंने ये पूछा कि और सो ओवर एक्सपोज टू दैट इंडस्ट्री एंड दैट इंडस्ट्री डजंट लुक सो गुड. जी. सारी 100 बात की एक बात, तो आपका तो डिराइव डिमांड है जी. एंड मैनेजमेंट सेट की सही बात है साहब. मतलब यू कम टू द क्रक्स, द मेन सवाल तो यही है. सही बात है. आई सेड आप उसको कैसे डी रिस्क करेंगे, उतनी सी बात कर लो सर, बाकी तो सब चीजें सिंपल है. सो द पॉइंट इज विद एक्सपीरियंस यू विल गेट टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. ये सवालों का गेम है, जवाबों का गेम नहीं है. जवाब किसी के पास नहीं है विवेक. We are all groping for the answer, but intelligence is asking the right questions. Again, it is a journey. It's a journey for investors. So to spend time is not necessarily the right thing to say. Right. Okay. Right. It is on the 4-5 critical things in that company or industry. If you ask, वो answer 5-10-15 मिनट में भी आपको आ सकते हैं. And again, I repeat, you don't have to have perfection in investing. In fact, I always say this, that perfect is the enemy of the good. Wow. So true. सीधी so बात. true. Yes. Perfect is the enemy of the good. मैं यही पूछता हूं, is this good enough or not यार? मुझे ये सोने से जड़ा, डायमंड से जड़ी कंपनियां नहीं चाहिए. वो तो देख ही रहे ना एशियन पेंट्स, उससे ज्यादा सुनहरी कंपनी तो थी नहीं हिंदुस्तान में भाई साहब. करेक्ट. कोटक बैंक, HDFC बैंक. हमें तो वो चाहिए जिनको हम निखार सकते हैं, जिनको सुधार सकते हैं, जिनको हम सजा के दैट कंपनी बिकम्स अ बेटर कंपनी. जो सजी हुई चीज है उसमें हमको क्या, हमारा क्या वैल्यू ऐड है? सो आई डोंट वांट परफेक्शन इन इन्वेस्टिंग. आई वांट ओनली गुड इनफ इन इन्वेस्टिंग. एंड गुड इनफ 40 कंपनीज विल गिव यू योर परफेक्ट 5 कंपनीज. परफेक्ट है सर. सेकेंड नंबर आपका जो स्टेप था, ट्रैक द नंबर्स, और उसमें से लास्ट में 20-25% कंपनी आपके पास बचे रहेंगी जो अच्छा करिए. तो you're talking about financial numbers, right? Not the stock price. आप देखते हैं इस स्टेज में स्टॉक प्राइस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, या इट्स मोर अबाउट फाइनेंशियल? अच्छा, देखते हैं आप. अल्टीमेटली भाई लेना और बेचना तो स्टॉक प्राइस को ही है ना, नंबर्स को क्या करेंगे? सो प्राइस एक्शन मैटर्स. मार्केट शुड बी रिकॉग्नाइजिंग. भाई मुझे खूबसूरत लगे लड़की, दुनिया को लग रही है कि नहीं लग रही है भाई, वो तो देखना ही पड़ेगा ना. सही बात. तो दुनिया को लगने का तो एक ही मापदंड है, स्टॉक प्राइस. सो आई वांट whatever I believe should be reflected in the stock price, and the stock momentum is very critical. Nobody should ever pretend that it doesn't matter. It matters. 100% it matters. So I'm all for it. So numbers भी है, momentum भी है, price action है, sectorally वो better कर रहा है, price action में better than its peer group. ये सारी चीजों को देखना है आप. Again, not difficult. People like yourselves have empowered people. Super easy. Absolutely.
चलिए सर, थोड़ा टेंजेंट चेंज करते हैं। और आपका बहुत दिन पहले एक ट्वीट आया था एंड आई जस्ट लव दैट ट्वीट। आपने मनी कंट्रोल में आर्टिकल भी लिखा था रिगार्डिंग एआई, एंड आई बीन रीडिंग अ लॉट ऑन एआई, आई बीन हियरिंग ऑल द पैनल डिस्कशंस ऑफ एआई थिंक टैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, and I so जी resonate with whatever you posted that this is the demographic advantage which India has. हम बहुत प्राउड फील करते हैं, इंडिया इज ए यंग कंट्री, but what probably is coming, the tsunami which is coming from the western world can drown us big time. So please sir, ये थोड़ा अपने अपने अंदाज में प्लीज आप बताइए सर, और इस पर और थोड़ा चर्चा करते हैं what is going to happen. सो देखिए विवेक, ऐसा है कि ये जो एआई का जो अब देख रहे हैं बोलबाला है, एंड इट्स रियल, इट इज नॉट मेक बिलीफ, इट एग्जिस्ट, आई यूज इट, आई एम श्योर यू यूज इट, इट इज गेटिंग मोर एंड मोर वाइड स्प्रेड। ये क्यों हुआ है? इन माई थिंकिंग इट इज डन बाय अमेरिका टू इंक्रीज अमेरिका's dominance over the world. Yeah. Okay, it is not only an economic or commercial endeavor, it is a geopolitical thinking, and अमेरिका बहुत लंबा सोचता है साहब, उनकी थिंकिंग के लेवल ही अलग है, तभी वो वर्ल्ड की जीडीपी का 75% है, मतलब दैट्स व्हाई दे आर व्हाट दे आर। जी सो द रीजन व्हाई दे आर थिंकिंग लाइक दैट इज दिस, they want to bring back jobs and growth back into their onshore. जी तो अब दो तरह के जॉब्स अमेरिका में निकले, एक मैन्युफैक्चरिंग निकल गया, वेंट टू चाइना, जी एक सर्विसेज निकल गया, इट केम टू इंडिया। सबसे आसान क्या चीज है वापस लाना? सर्विसेज। सर्विसेज, करेक्ट। करेक्ट। सर्विसेज कैसे आएगा वापस? एआई। भाई आपने एआई का एक इतना बड़ा रामबाण निकाल दिया, तो अब कोडिंग जो इंडिया में बैंगलोर में हो रहा है, कहीं भी और हो रहा था, अब धीरे धीरे करके इट विल नॉट रिक्वायर दोज मिलियंस ऑफ वर्कर्स इन इंडिया. They can be done onshore within the US. But at 1/10 of the total manpower requirements, you can hire in America and get the coding done there. That is one thing. Second, now with robotics, which is intelligent, embedded with ChatGPT. Now the robots are no longer mechanical animals; they are thinking animals, as we have seen in Optimus and other robots. They will bring manufacturing jobs also back to America. So services भी लेके जाएंगे, manufacturing को भी वापस लेके आएंगे. So it is a larger move for America to bring back what they gave to the world over the last 30 years or 40 years, that now bring it back. It is America first strategy. Globalization में अब उनका कोई विश्वास नहीं है. That is the real reason. It will hurt India. 60% of our GDP is services. वो services की job तो सबसे पहले जाती है साहब इस चीज में. And I'm sure you know it, I know it. There are people who are silently getting laid off. Yep. It is not widespreadly known as of right now, but it will become headlines. And it is a genuine tsunami. I don't see a way out of it, to be honest with you. I can only hope that we are on the right side of this tsunami and not on the wrong side of it. Do you think we are doing all the right things to be on the right side of tsunami? Because ultimately आज जो हम करेंगे उसका फल, पहले तो हम कहते थे जनरेशन को भुगतना पड़ता है, आज जो आप करेंगे उसका इम्पैक्ट, अब तो ये लगने लगे आज हम जो करेंगे या नहीं करेंगे वो 2 साल बाद हम ही को भुगतना पड़ेगा, बिकॉज द जनरेशन गैप हैज रिड्यूस्ड टू 2 years. And I'm very scared of my kids, no doubt about it, how they are going to struggle in this new world. I think we are doing a very, I think from a policy perspective बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आपने देखा पॉपकॉर्न के रेट्स बढ़े हैं या कुछ हुए हैं पीछे, मैंने वही कुछ पढ़ा था. तो मतलब कहेंगे कि बच्चों सिनेमा मत देखो, काम करो, मेहनत करो, वरना तुम सिनेमा देखने के लायक नहीं रहोगे. सो आई थिंक वी आर डूइंग द राइट थिंग्स. I got your answer, and I'm not going to elaborate on that point further. But getting into AI a bit, and you are located in Dubai, which is also a very open country in terms of innovating things like crypto and AI. ये सब वहाँ पर इतने इम्ब्रेस किया जाता है कि चलो ठीक है, नई चीज़ आप एक्सपेरिमेंट करो यहाँ के, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हाउ डू यू सी दैट न्यू वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, बिटकॉइन और द एनीथिंग जनरेटिव एआई, हाउ इज इट इवॉल्विंग when you look at the Western world from Dubai? Because when we look at, we get very scared. From Dubai, when you are looking at, are you finding big opportunities there for yourself? So my thinking is this, that I don't want to become obsolete. I don't want to become a fossil. And ये बहुत fashionable होता है for our generation people to say नहीं फालतू है बिटकॉइन, फालतू है क्रिप्टो, एआई का कोई मीनिंग नहीं है.
I am not of that camp. I'm a big believer in technology, and I believe technology has solutions to most problems that we have. It is also a problem in its own right. I'm very optimistic on newer things dominating the world. Now, in that optimism, there will be people who get hurt. And that's my fear. As an Indian, I fear, because the सारी जो हमारी prosperity की growth हुई है, IT, I think, is one of the biggest, if not the biggest contributor. Yeah. I fear, genuinely, I feel scared about that scenario. कि ये जो बैंगलोर का बूम हुआ, हैदराबाद का हुआ, पुणे का हुआ, ये क्या IT हुआ ना साहब, मैन्युफैक्चरिंग हम कहाँ करते हैं कुछ भी. जी. So I am very, very concerned, to be honest with you. ओके. ओके. तो अगर आप इंडिया में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच आई एम श्योर दैट कुछ भी हो आप इंडिया में तो करेंगे इन्वेस्ट, तो जी, किस जी, तरह बिल्कुल के करेंगे. थीम्स में अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? आपको लगता है कि चलो जो भी है एआई आएगा, जो भी होगा, बट ये थीम्स तो एवरग्रीन थीम्स है और इसमें अपॉर्चुनिटीज मिलते रहेंगी. So I am I have been table thumping bull on small caps in India for the Yes. last few years, and I Yes. continue to be so. I continue to be wholeheartedly so. And that was the thinking, that reason why I became so bullish was, I remember आपके वेस्ट बंगाल की कंपनी मेरे से मिलने आई थी, ज्वेलरी की कंपनी है, प्री आईपीओ के टाइम पे, 4 साल पहले, हाँ 3-4 साल पहले. एंड व्हेन आई लुक्ड एट देयर नंबर्स, और हम तो वेस्ट बंगाल को समझते हैं कि यहाँ तो पता नहीं भगवान जाने कोई ज्वेलरी खरीदने के लायक लोग हैं कि नहीं है, मतलब इट इज कंसिडर्ड द बैक वाटर्स ऑफ इंडिया. आई एम सॉरी, नो इंसल्ट मेड, intended, because I mean, I love Calcutta and I love Bengal. Like I said, Dhanbad is 50% Bengal only. All my friends, I speak fluent Bengali also. So जब उसके नंबर्स मैंने देखे तो आई वाज शॉक्ड. आई सेड यार, आप वेस्ट बंगाल और ये उड़ीसा में बेच के आप इतना पैसा कमाते हो? कहता हम कमाते हैं. देन आई डिड सम बैक ऑफ द एनवेलप दैट व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, लेट्स से 90s की बात करें तो इंडिया के टोटल जीडीपी एवरेज फॉर द 10 years वो 200 बिलियन. ओके, 200 बिलियन का अगर मीडियन जीडीपी वो था इन द 90s. ओके, आज एक एक जोन की जीडीपी इंडिया की 500 से 800 बिलियन है. राइट. अगर पांच जोन में इंडिया को बांटे तो औसत दर पे इतना ही होगा, किसी का ज्यादा हो किसी कम होगा, बट मोटा मोटी 500 से 800 है. आप सोचिए कि 90s की कंपनियों के सामने में टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम 200 बिलियन का था पूरे हिंदुस्तान का. आज एक खंड में आप काम कर रहे हो, आपकी टैम है 800 बिलियन. So today small caps have a TAM larger than the large caps had in the 90s. Think about that. Understand the magnitude of what I'm saying. Right? So ये small cap सिर्फ small cap इसलिए नहीं होता क्योंकि आपके मार्केट कैप कम है. आप स्मॉल कैप तब होते हो जब आपकी एड्रेसेबल मार्केट छोटी होती है. इनकी एड्रेसेबल मार्केट इतनी है कि लार्ज कंपनीज बन जाएंगी इन देयर ओन नेक ऑफ वुड्स. ओके, इंडिया इज ए स्टेट बाय स्टेट प्ले. ओके, आई हैव अ कंपनी इन कानपुर, इन आई थिंक इन यूपी, ओके, व्हिच डज ओनली बिजनेस इन यूपी. वो कहता था मुझे जाना है राजस्थान, एक मैं बोला पहले यूपी को एक्सप्लॉइट कर लो. इट इज अ ह्यूज स्टेट. So I'm saying bullish, I'm saying extreme maximum bullishness remains on small caps, because these small caps today have the addressable markets that even the large caps did not have in the 90s. They will become giant size companies. But दो ही स्टेट में धंधा करेंगे, 3 में करेंगे. पैन इंडिया करने की जरूरत ही नहीं है साहब आपको. Got it. And I am on that theme itself, bottom line. सो स्मॉल कैप में एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव फेस फ्यू. तो वहाँ से आपकी की लर्निंग्स कि क्या रेड फ्लैग्स क्या है, क्या अपने को ध्यान रखना है, बिकॉज वहाँ पे एग्जिट मिलना भी थोड़ा मुश्किल होता है. वेल्थ डिस्ट्रॉय, ऑब्वियसली डाइवर्सिफिकेशन से उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, बट व्हाट्स योर रेड फ्लैग फॉर स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग? नहीं, रेड फ्लैग होते हैं. सारे स्मॉल कैप में रेड फ्लैग होते हैं. आपको कोई स्मॉल कैप नहीं मिलेगा बिना रेड फ्लैग के. मैंने एक बार एक फोरेंसिक ऑडिटर से बात की थी. सुनिए साहब, हाँ, तो मैंने कहा तुम क्या देखते हो इसमें रेड फ्लैग? उसने एक ही बात कही कि मुझे आप दुनिया की बेस्ट कंपनी लाके दे दो और फोरेंसिक करा दो, मैं उसमें आपको रेड फ्लैग निकाल दूंगा. हर कंपनी में रेड फ्लैग है साहब. कहा नहीं है? अकाउंटिंग पॉलिसी है ना साहब, उसमें आप इन्वेंट्री कैसे देख लो, ये एक्सपेंस ऐसे देख लो. तो ये तो अनलिमिटेड, ये तो यहां जाना ही नहीं है. रेड फ्लैग्स है मान के चलो. हमें देखना है कि हमने वर्स्ट नहीं लिया.
और ले भी लिया, थोड़े पैसे लग भी गए, द एसिमेट्री ऑफ योर रिटर्न प्रोफाइल इज सो मच. कितना खो जाओगे? 50%. नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर देखिए साहब, लॉस में नहीं फंसता है, वो लॉस को सेकता है बैठ के. करेक्ट. हम लॉस को सेकते नहीं. गलत हुआ, निकल जाने का, इट्स अ सर्जरी. यू गॉट कैंसर, सर्जिकली रिमूव इट. द Got it. ट्रिक इज टू सर्जिकली रिमूव लॉस मेकर. द रेड फ्लैग वाले को रिमूव कर दो. बट ये मान के चलो कि नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं होता साहब. सब स्मॉल कैप में कुछ ना कुछ खामियां हैं, मान के चलना है. अगर आप ये पर्सपेक्टिव ले लो तो फिर क्या दिक्कत है आपको लाइफ में? एकदम सही है. और इसको मैं वो जॉइंट फैमिली वाला उससे भी रिलेट कर लेता हूँ आपका, कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगे ही, अब आपको टॉलरेंस होंगे ना लेवल को ध्यान रखना है ना. लवली. एग्जैक्टली. लवली सर. सर कुछ और बातें हैं. आई हैव द लिबर्टी ऑफ सम मोर टाइम इफ यू अलाउ मी. ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ और बातें आपके साथ करनी है. एसएमई सेगमेंट जैसे अभी काफ़ी चर्चित है, बदनाम भी हो रखा है. बट देन देर इज़ अ सेगमेंट ऑफ एसएमई इन्वेस्टर्स हु हैव रियली क्रिएटेड वेल्थ. आई मीन, मैं कई लोगों से बात करता हूँ बिकॉज ऑफ माई प्रिविलेज ऑफ गेटिंग एक्सेस टू फ्यू पीपल, कि कोई जॉब करता था ईएनवाई में, कोई फलाना जगह जॉब करता था, उसने 5 करोड़ से चालू किया, आज वो खुद अपने बलबूते पे 50 करोड़ का उसने वेल्थ क्रिएट कर लिया, only because of SME segment, right? Which is such a great stories. I mean, we have been talking about the big investors from India, the Bombay Club, and now suddenly that big investors have also become democratized. आज इंदौर से कोई बड़ा इन्वेस्टर बन गया, 100 करोड़ का इक्विटी बुक है. कानपुर में कोई इन्वेस्टर बन गया, 100 करोड़ का इक्विटी बुक है. तो डू यू थिंक ये जो एसएमई टाइप के जो सोच है हमारी अभी भी, मे बी मेन स्ट्रीम मीडिया में, मे बी रेगुलेटर में, कि एसएमई गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये सही है? और क्या आप इन्वेस्ट करते हैं एसएमई सेगमेंट्स में? नहीं, बिल्कुल करता हूं. आई एम वन ऑफ द अर्लीस्ट इन्वेस्टर्स इन द एसएमई मार्केट. बिकॉज मैं बिल्कुल इस कैंप में बिलोंग नहीं करता कि फालतू हैं, फ्रॉड है, ये है, वो है. वही मैं कह रहा हूं, समाज है सर, समाज में अच्छे बुरे सब तरह के लोग मिलते हैं आपको. तो आप वाई टू ब्रांड समथिंग एज बैड? माई व्यू इज दिस, एंड आई एम वेरी क्लियर इन माई व्यू, दैट एसएमई शुड नॉट बी ओवर रेगुलेटेड. व्हाट इज एसएमई? स्मॉल एंड मीडियम. अब स्मॉल एंड मीडियम कैपिटल के लिए कहां जाता है? बैंकों के पास जाता है, करेक्ट, या प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल के पास जाता है, करेक्ट. अगर आप उनको स्टॉक मार्केट का एक्सेस देते हो तो आखिर क्या होगा सर? कोई कंपनी ने 25-50 करोड़ रुपए उठाए, मान लीजिए 100 कंपनियों में 5 कंपनियां फ्रॉड निकली, मैं बोलता हूं 10 कंपनियां फ्रॉड निकली. ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों को कंपनियां फ्रॉड नहीं मिलेंगी. ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने बैजूस में इन्वेस्ट किया वो सब बेवकूफ थे, करेक्ट. भाई वो सारे दुनिया के सब नामी वेंचर कैपिटलिस्ट थे, सबने अकाउंटिंग देखी है, तो गलतियां तो सबसे होंगी, ऐसी कोई बात नहीं है. वाई आर यू ट्राइंग टू प्रिवेंट मिस्टेक्स फ्रॉम बीइंग इनकर्ड बाय इन्वेस्टर्स? लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम मिस्टेक्स ओनली. अच्छी चीजों से आपको सीख नहीं मिलेगी. आपको हेल्थ को अगर सुधारना है ना, तो पहले बीमार पड़ो सर, तभी नजर आएगा कि यार ये तो 4 दिन बेड पे सोना बहुत मुश्किल है, अब अपने ठीक चलेंगे भाई, अपने बुरी आदतों को बंद कर देंगे, राइट. वरना तो सबको माँ बाप बोलते थे, ये बोलते थे, कौन मानता है? तो पॉइंट इज लेटिंग इन्वेस्टर्स burn their hands also in 5, 10, 20% of the SME market is good. Why is that so wrong? Oh, hyper regulating it will prevent those companies from entering the market. And my belief is let retail investor also become a venture capitalist. क्या दिक्कत है इसमें? भाई आपके स्मॉल टिकट में जा रहा है ना, अगर 50 करोड़ का आईपीओ है, एक एवरेज आदमी को क्या मिल रहा है साहब? 100 शेयर, 50 शेयर, 200 शेयर ही तो मिलता है, करेक्ट. जो सोफिस्टिकेटेड है वो लोग प्री आईपीओ में ले लेते हैं. दे आर रनिंग अ डिफरेंट रिस्क ऑफ लॉक इन. जो अनसोफिस्टिकेटेड है उनको आईपीओ में कुछ खास मिलता नहीं है. तो दिक्कत है क्या? 100 शेयर पे कितना बैंकरप्सी कर लोगे यार? So I am saying hyper regulating SME market is not at all. Again, now current rules have made it rule based instead of merit based. I mean, क्या मीनिंग है इस चीज का? Let the small investor become a venture capitalist, and he is willing to. Absolutely. जो पहले I am not in the favor of hyper regulating, SME market.
जो पहले से स्टार्टअप प्लेटफॉर्म्स एक हुआ करते थे, जो एग्रीगेटर का काम करते थे, एंजल नेटवर्क जिनको बोलते थे, आज वहाँ तो लोग 5 लाख 10 लाख 15 लाख डाल के आज भी लोगों के पैसे फंस गए हैं। वो स्टार्टअप्स को एमआईएस नहीं मिलता है उनसे। एटलीस्ट हमने एक ये प्लेटफॉर्म दे दिया है जहाँ पर लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो वो मैं प्लेटफॉर्म तो में यही तो कह रहा हूँ, रेगुलेटेड है, उनको रिजल्ट छापने ही छापने हैं, बैलेंस शीट छापना है। यू आर राइट अबाउट स्टार्टअप। अब बंदा बंदा मेरे तो जानता हूँ स्टार्टअप के बंदा ऑफिस ही नहीं आता है। हम्म। अब क्या करोगे, जाके मारोगे पीटोगे, करोगे क्या यार? एमआईएस नहीं देता है, नंबर्स ही नहीं देता है, क्या करोगे आप? सो आई मीन आई थिंक इट शुड बी अलाउड टू फ्लरिश, डोंट कर्टेल इट। गॉट इट, गॉट इट। सर, और डेरिवेटिव्स पे आपका क्या ओपिनियन है? आपने तो ऑलमोस्ट ये पूरा मार्केट को डेवलप होते देखा है, राइट फ्रॉम 2001 डेज। तो व्हाट्स योर ओपिनियन नाउ? बिकॉज उसको भी काफ़ी ज़ोरों से क्रिटिसाइज किया जा रहा है, एंड लॉट ऑफ हैमर इज देयर ऑन दैट सेगमेंट। तो उस पर कोई ओपिनियन है? हाँ, अब देखिए साहब, एसएमई में इन्वेस्टिंग करना मैं बिल्कुल उसके सहमति में हूं, लेकिन हम्म। एफएनओ में गैम्बलिंग करने के बिल्कुल मैं असहमत हूं, क्योंकि हम्म। ये जो गैम्बलिंग जो चीज है सर, ये इसका अंत बुरा ही होता है। हम्म। गैम्बल करके कोई बहुत बड़ा पैसा कमा ले, ये हजारों में एक इंसान बनता है इस तरह का, अल्टीमेटली लॉस ही होता है। सो इस चीज को मैं रेगुलेटेड पार्ट को मैं सभी को ये मैं कहता हूं, अच्छी अच्छी चीज है कि इस तरह के थोड़ी नियंत्रण लाया हो। और अगर आप वेस्ट में एफएनओ या ऑप्शन करना चाहें तो द नंबर ऑफ क्यूएनए एटसेट्रा यू टू गो थ्रू इंटरैक्टिव ब्रोकर्स पर, जो कि माइंड बॉगलिंग है, यहां तो हर आदमी कर सकता है। तो हम्म। उस पर नियंत्रण होना चाहिए, एंड ओके। काफी हार्ड नियंत्रण होना चाहिए, उसके फेवर में मैं हूं बिल्कुल। Okay, got it. So there should be entry barrier, only specifics should be allowed to say enter the segment. यस, Got it, got it, got it. यस। The last question है, where do we see you evolving from here on? I've never asked you your age. I'm not interested in knowing that because you look almost in 40s still. So where do we see you? You continue to be an entrepreneur, because your journey of an entrepreneur has always been very inspiring for all of us. And you आई have a एम, startup as well, if I'm not wrong. yes, I have actually two startups, not one. Lovely. So we'd And love to now know I'm more in the about them. process of starting something which I believe, if it works out, will be my legacy to the world, but I will not reveal anything more than that. So that's a third startup I'm working on right now, but that is a far bigger scope and canvas than the other two. Let's see. I'm very, very hopeful I can change the face of certain parts of the medical industry with that technology. Wow, brilliant. So we continue to see entrepreneur Shankar Sharma around us. And obviously, your investing journey has always been very inspiring. And I'm very happy to see you talking good things about smaller segments, because really India needs to wake up to these things and stop getting boggled down with bigger people talking negative things about smaller things now. नहीं 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 सर, नहीं नहीं, मैं तो बोलता हूँ थोड़ा जाओ भाई, क्रिकेट खेलने जाओगे, गेंद लगेगा ना सर पे, क्या क्या प्रॉब्लम है? आई मीन जाते जाते मैं आपको बोल के जाता हूँ, बिकॉज आई यूज्ड टू बी अ क्रिकेटर इन स्कूल एंड कॉलेज, Hmm. एंड योगराज सिंह, Yuvraj father was our coach, and he was very fast. I remember that he played for India also. Yeah. And हम लोग नेट्स में खेलते थे. Back then there was no helmet, hardly any guards and all that. And we used to say, sir, थोड़ा सा धीरे करना. And he's a Punjabi, and he used to, obviously, I will not use the words before that. And he कहता था कि सालो क्रिकेट खेलना है कि नहीं इंडिया के लिए? हमने कहा खेलना है. तो क्या वहां इमरान को बोलोगे क्या कि सर थोड़ा सा स्लो करना सर? खेलो, चुपचाप खेलो जाके. हाँ, जाओ खेलो, गेंद लगेगी तभी तुमको समझ में आएगा कि कैसे कैसे बाउंसर को हुक करते हैं. तो दैट्स इट. घबराना क्यों है लॉस से? लॉस को एम्ब्रेस करो. Lovely, sir. It was great talking to you, Shankar ji. I've been trying this for some time, but I got an opportunity यस, to आई नो. interact with you. And कभी मौका मिलेंगे तो आपके साथ ऑफलाइन में बैठ के बहुत सारी बातें करनी है. Thank you so much. ग्रेट. Thank you थैंक यू. so ऑल द much, वेरी sir. बेस्ट विवेक, एंड यू आर Thank डूइंग अ you. फैबुलस जॉब. कांग्रेचुलेशंस. Thank you, थैंक sir. यू. Thanks a lot for your time, sir. Bye bye. Investments in the securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.